हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन विथ प्रीति। आज वीडियो रे आमे पेपर 1 रो लास्ट यूनिट नंबर 8 टीचर एजुकेशन को डिस्कशन करबा को जाउजंती। फास्ट देखिबा तार मीनिंग। टीचर एजुकेशन गोटे प्लान प्रोसेस जहा कि प्रिपेयर्स करे टीचर्स मानकु विथ necessary knowledge, skills, attitudes, values, and professional competencies required for effective teaching and learning process. NCT ର definition ରହିବ teacher education ପାଇଁ teacher education refers to programs that prepare teachers to teach effectively through theoretical knowledge, practical training, research, and professional ethics. एनसीटी ର ମତରେ टीचर एजुकेशन ର अर्थ है विभिन्न प्रकार प्रोग्राम्स अरेंज करी टीचर्स प्रिपेयर करवा जा माध्यम रे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली इफेक्टिव हो पारिबो जेमिति कि सेमानंको थियोरेटिकल नॉलेज सहित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देबा, रिसर्च करबा एवं प्रोफेशनल एथिक्स देबा। नेक्स्ट देखिबा नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिन्स बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द टीचिंग कैरियर। नेक्स्ट इज टीचिंग इज ए प्रोफेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। टीचिंग प्रोफेशन रे ट्रेनिंग न देले, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग न देले गोटे इफेक्टिव टीचर केबे भी हेई परिबो नाही। It is dynamic in nature. It changes according to educational policies and social needs. Next is, it is scientific. It is based on educational psychology, research, and teaching methods. Teacher education practical oriented कारण एठी include होता internship program, teaching practices, micro teaching, and lesson planning. Then teacher education is learner centered. It focuses on students' needs and individual differences. Then value oriented madhya because it develops moral values, ethics, and national integration among teachers. Teacher education is also skill based. It develops communication skills, classroom management skills, then assessment skills, ICT skills. ये सब skills रा development होता है टीचर एजुकेशन रे। सोशियली रेलिवेंट कारण टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स टीचर्स टू सॉल्व सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तेणु यह सोशियली रेलिवेंट मध्य। देन टीचर एजुकेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर because it promotes education for all children including CWSN. CWSN रो full form है children with special needs. Next देखिबा what are the objectives of teachers education. First is, it develop professional competence, then improve subject knowledge, develop pedagogical skills, personality development मध्य होता है, promote करता है values को, देन डेभलप होता है रिसर्च एटीट्यूड, आईसीटी कॉम्पिटेंसी होता है एवं इनक्लूसिव एजुकेशन मध्य टीचर एजुकेशन रे मिलता है। आशा करूँ आज क्लास टी आपण मानकु भल लगी थिबो। जदि भल लगी ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा भूलिबे नहीं। रहिली। थैंक यू।